हाँ सर, स्टार्ट हो गई है सर। थैंक यू सूरज, थैंक यू सो मच। सो पहले हम थोड़ा बात कर लें इस बारे में कि अवॉइडेंस बिहेवियर और सेकेंडरी बिहेवियर में क्या फर्क है। मैं उम्मीद करता हूँ हिंदी हम सब समझते हैं। संजय, आप तो हिंदी समझते ही होंगे। मधुरिमा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद सिंपल हिंदी? No, sir. You understand Hindi, na? Okay, good. Thank you. So, who wants to go first and explain the difference between secondary behavior and avoidance behavior quickly? बाकी लोग अगर उनका जवाब तैयार है तो वो टेक्स्ट में चैट में भी डाल सकते हैं। तो रजत ने हाथ उठाया। रजत, बताइए क्या फर्क है दोनों में? सर सबसे पहले तो रजत गुड इवनिंग। बोलिए। हाँ, हेलो। सर जो सेकेंडरी बिहेवियर होता है, इसमें जो हमें दिखता है या सुनाई देता है, जो हम हरकत करते हैं वो शामिल होता है। एंड जो अवॉइडेंस बिहेवियर होता है, उसमें हकलाने से बचने के लिए हम जो भी चीजें करते हैं उसमें वो शामिल होता है। तो थैंक यू सर। रजत, मैं कितना भी जल्दी बोलूं मगर आप अपनी स्पीड में बोलना, ठीक है? ये एक गोल्डन प्रिंसिपल है कि लेट द अदर पर्सन नॉट हरी। सामने वाला कितना भी तेज जल्दी क्यों ना बोल रहा हो, मगर आप अपनी आराम से स्पीड में। गुड। सो who can add something to this, or who would like to मैं have second chance? हाँ सर, Let me मैं go to विकास। विकास, आप बोलिए विकास। ओके, तो मेरे पास रजत के ने जो बोला उसमें कुछ और ऐड करने को नहीं है। मतलब आजकल रजत मेरे गुरु हैं और मैं रजत का चेला हूँ। मैंने सोचा आप कहोगे कि रजत मेरी माइंड रीडिंग कर ले रहा है। Okay, so Madhurima also has raised hand. So let me go to Madhurima and then I'll come to Sanjay. So question is, what is the difference between? First of all, good evening, sir. Yes, yeah. Uh, so I think that both this avoidance behavior and the secondary behavior are in voluntary. Okay, like we don't do it consciously. Like for us, this like every person has secondary behavior. Like for uh, example, say I have a habit of singing to and fro while talking. So like this, like I just move. So this is my secondary behavior. Also, like many people have a habit of putting their spectacles on from time to time. Okay, so these are a kind of Okay, thank you so much. Got it, got it. Thank you, Madhurima. Let me go to Sanjay Kushwaha. संजय कुशवाहा, एक लाइन में बताइए दोनों में क्या फर्क है? संजय कुशवाहा। संजय कुशवाहा, मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। संजय कुशवाहा, जोर से बोलिए जरा। आपने हैंड रेज किया है। हाँ, यू आर ऑडिबल। In one line, how will you differentiate these two, avoidance behavior and secondary behaviors? Okay sir, so I I I think अवॉइडेंस बिहेवियर वो बिहेवियर होते हैं जिनका यूज हम लाइक स्टैमरिंग से बचने के लिए करते हैं। और सेकेंडरी सिम्टम्स मीन्स जो लाइक वो लाइक ए ए ए
ई ई ई ई इनवॉलेंट्री होते हैं। एक सेकेंडरी सिम्टम मोस्टली हम स्टैमरिंग से बचने के लिए नहीं करते, बट अवॉइडेंस स्टैमरिंग से ओके बचने संजय, के लिए ओके करते हैं। आई थिंक सो। ओके, मैं समझ। अच्छा, बाकी लोग भी अपने दिमाग में सोचते रहे। I may not invite you to answer, but even if I don't invite you to answer, at least you can go in your own head and think what could be the correct answer, or how would you improve upon the answer given by your colleagues. So others should also think about it. This is a very interesting topic because you have covered secondary behavior some time back. Now you are dealing with avoidance behaviors, and these two are very common concepts in stammering. So think about it. What is the big difference? संजय ओझा, संजय आप कैसे बयान करेंगे इस फर्क को एक लाइन में, वन लाइनर? सर संजय ये ओझा। सेकेंडरी बिहेवियर हो, हाँ सर, सेकेंडरी बिहेवियर होते हैं जब आप स्टैमरिंग वाली सिचुएशन में फंस जाएं, तो आप जैसे तैसे उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, उसके लिए सेकेंडरी बिहेवियर होते हैं। अवॉइडेंस बिहेवियर होते हैं जब हम स्टैमरिंग वाली सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते। ये फर्क है मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो मैं यही इसी को रीइंफोर्स कि दोनों में बुनियादी फर्क ये है। सेकेंडरी बिहेवियर वो है स्टैमरिंग के बाद होते हैं, और अवॉइडेंस बिहेवियर वो है जो स्टैमरिंग से बचने के लिए आप पहले से ही करना शुरू कर कि अंकल जी आए हैं, वो जरूर पूछेंगे बेटा क्या पढ़ रहे हो आजकल, क्या नाम है तुम्हारा, कॉलेज का नाम क्या है। तो आप अंकल जी के पास जाते ही नहीं, आप ड्राइंग रूम में जाते ही नहीं, अपने कमरे में घुस जाते हैं। मदर कहती है मार्केट से ये ले आना, आप कोई बहाना बना के निकल जाते हैं। ये सब अवॉइडेंस है। और सेकेंडरी बिहेवियर जो है वो है जो स्टैमरिंग के फौरन बाद हो। स्टैमरिंग के बाद पलकों का झपकना, या हाथों का हिलना, या एकदम से घबराहट होना, दिल धक 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 करने लगना, कंफ्यूज सा होना, अगली लाइन भूल जाना कि मैं क्या बोल रहा था। ये सब सेकेंडरी बिहेवियर। सेकेंडरी को समझने का एक तरीका ये है, सेकेंडरी इज सेकेंडरी टू ए प्राइमरी इवेंट. Secondary behavior are secondary to a primary impulses. To say a syllable just fails to come, just refuses to come. आपको बोलना था कानपुर, आपने का तो बोल दिया, का सिलेबल, का न्यूरोलॉजिकल इंपल्स स्पीच एरिया से यहाँ तक आ गया, तो आपने बोला मैं कल का। अब उसके बाद न बोलना है, न का सिलेबल के लिए इंपल्स दिमाग से नहीं आ रहा। जैसे होता है ना कि आप स्विच ऑन करते हैं और ट्यूबलाइट इमीडिएटली ऑन नहीं होती, वैसे ही न्यूरोलॉजिकल इंपल्स नहीं आ रहा है, तो आप का के बाद आप रुक गए। तो ये प्राइमरी फेलियर है। ये प्राइमरी इवेंट स्टैमरिंग के प्रोसेस में। इसके बाद अब जो कुछ हो रहा है सेकेंडरी रिएक्शन, इसको तो सेकेंडरी बोलते हैं। जैसे पलकों का झपकना, सर का ऐसे होना, या हाथ का हिलना, या बॉडी का टेंस हो जाना, या सांस का रुक जाना। जब का के बाद आप का के बाद न नहीं बोल पा रहे, आप कानपुर नहीं बोल पा रहे, तो आप का सांसों से जोर लगाते हैं, सांस रोक लेते हैं। ये सब सेकेंडरी बिहेवियर है। और सेकेंडरी बिहेवियर जो है वो फिजिकल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल मतलब इमीडिएट फीलिंग ऑफ गिल्ट कि ओ माय गॉड मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, अदर पर्सन मस्ट बी थिंकिंग वेरी बैडली अबाउट। तो ये सारे जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन यानी शेम, गिल्ट, फियर, एंजाइटी, नर्वसनेस, कंफ्यूजन, ये सब चीजें, ये भी सेकेंडरी बिहेवियर। और पलकों का झपकना, कंधे का ऊंचा हो जाना एक तरफ को, ये भी सेकेंडरी बिहेवियर। और अवॉइडेंस बिहेवियर क्या है? जो आप इस फैमिली के डर से बहुत पहले शुरू कर देते कि आज मैं घर जाऊंगा तो मदर मेरे को मार्केटिंग करने के लिए बोलेंगी, पंगा है उसमें, तो मैं ऐसा करता हूँ घर जाता ही नहीं हूँ, खेलने चला जाता हूँ दोस्तों के साथ, और रात के 9 बजे लौटूंगा। तब तक सारा चक्कर खत्म हो चुका होगा, मार्केटिंग कोई और कर चुका होगा मेरी जगह पे। ये अवॉइडेंस बिहेवियर। तो आप में से बहुत से लोगों ने अवॉइडेंस बिहेवियर पे
तो अब फटाफट हम थोड़ा सा फीडबैक ले लें आप लोगों से कि ये वीडियो बनाने में और ये सब चीज़ों के बारे में सोचने में कि मेरा अवॉइडेंस बिहेवियर एग्जैक्टली क्या है। तो ये सब सोचने से आपको कुछ फायदा हो रहा है या कुछ मुश्किलें नहीं है, तो दोनों बातें आप शेयर कर सकते हैं। द गुड इट इज डूइंग टू यू एंड ऑल्सो इफ इट इज कॉजिंग यू सम प्रॉब्लम, बिकॉज कई बार लोगों को प्रॉब्लम भी होती है कि पहली बार जब वो अपनी स्टैमरिंग को कन्फ्रंट करना शुरू करते हैं तो पाते हैं कि एकाएक उनकी स्टैमरिंग बहुत बढ़ गई, और कई बार उनकी फैमिली उनके दोस्त भी कहते हैं यार तुम कैसा तुम TOPG कर रहे हो यार, तुम्हारा हकलाना और बढ़ता जा रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है। So, who wants to give me feedback on last 1 week? So let me start with Yatharth. I'll just invite 2 or 3 people because we have got a lot of other interesting things to do after. So Yatharth, what is your feedback? Yeah, thank you sir for the opportunity. मैंने काफी सारे अपने अवॉइडेंस बिहेवियर देखे एंड आई वाज शॉक्ड दैट एक्चुअली बहुत सारे हैं अवॉइडेंस बिहेवियर दैट आई पोर्ट्रे इन माय जर्नल लाइफ। और अब नाउ आई एम कॉन्शियस अबाउट इट दैट आई डोंट लाइक मैं अपने से उन बिहेवियर्स को नहीं करना चाहता। So like some of the behaviors were like changing words, changing Hindi to English, and even changing the changing the tense of the sentence, which made it wrong. And all those, there are a lot of it, 7, 8 points that I had. So I am trying to now change it, but of course, like you said, that it has increased my stammering in some way. But I think it is healthy change that I am going through. So yeah, that's my take on it. Thank you, Yatharth. Thank you so much. Let me invite Madhurima for her feedback. Is she here? Madhurima, I think she exited. There may be some problem with her. Anyway, so let me invite Sagar Motiwale. सागर, आपका अनुभव कैसा रहा पिछले 7 दिन का? Thank you, sir, for giving me an opportunity. सर, मेरा पिछला 1 वीक बहुत अच्छा था। मैंने पब्लिक प्लेसेस में वॉलंटियरिंग स्टैमरिंग किया और मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। Okay, thank you, Sagar. Let me invite Dhruv. Dhruv, you want to share something about your recovery process? I believe you did a presentation in your organization, in that organization where you are training. Yes. Hi everybody. Great to see everyone here. So yeah, so actually I did like a teacher training program. Yeah, at a farm near Bangalore. So I found, so actually in the beginning of the program, I kind of really emphasized that I stammer. I sort of disclosed in the beginning during my introduction. I then gave a speech. So like we like had to like share a story about our lives. So I gave us a speech about stammering as well, in that story. So I think I kind of emphasized so much about my stammering that, you know, I became very comfortable then speaking. And then in the speeches that I was delivering, I wasn't stammering that much. So then the instructor was saying, "Oh, wow, you didn't stammer that much." But then I told him, like, you know, if you give me that feedback, it makes me want to be fluent, which is going to make me stammer more and get more nervous. So please don't give me that kind of feedback. So anyway, it was quite interesting, but I think that Okay. Advertising and sharing about my stammering and stammering openly, doing like different kinds of stammering, voluntary stammering in front of them, really kind of like made me more comfortable, yeah, with the group. So Were you able to use some technique consciously?
were you able to use some technique consciously in that presentation? I think so, yeah. So like one thing I tried to do like before or like at the beginning of every presentation was to consciously do some voluntary stammering. And especially if it felt like I was becoming too fluent, I was like, I have to do some voluntary stammering here because, you know, like fluency, I think is like a drug. Like when you're fluent, you want to just keep on being fluent, but it can be dangerous, you know. So Yes, yeah. I also have noticed that when at the very beginning, if I do a little couple of voluntary stammering or a little bouncing, then I remain in control throughout the session. I mean, I'm able to continue easily. It's like either you can say in the beginning that I stammer, or you can actually stammer and show them this is what I mean. Both are good and both can be used in different situations. So Rajat, आपका अनुभव कैसा रहा? Rajat. सर जो मेरा अनुभव था वो ब ब ब बैलेंस में रहा। एक्चुअली मैंने मैंने अपनी खूब प्रैक्टिस की। लोगों ने मेरे को बोला या जहाँ पे भी मैंने की कि यार तुम ऐसा करो, तुम हकलाते हो तो ना तुम मेरे को इशारे से समझा दिया करो, ऐसे बोल दिया करो। बट इस बार जो मैंने इस वीक में मैंने जो अपने न्यू चेंज देखा था वो ये था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे मैं आंसर दे सकता हूँ मैं वहां पर मैं फुल उसको मैं ना पूरी तरह से स, 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 समझा दूं सर। जैसे कि मैंने जानबूझ के बोला कि मेरे को बोलना अच्छा लगता है। मेरे को कोई डीमीनिंग फील नहीं होता और मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बोलूं। बस आपको मेरी से एक हेल्प करनी है, बस 2 सेकंड आपको मेरे को बस ज्यादा देने हैं बस। तो ये मेरा एक न्यू एक्सपीरियंस था सर इस वीक का। बहुत बढ़िया रजत, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अब हम लोग ब्रेकआउट रूम में जाएंगे 10 मिनट के लिए, और वहां पे हम डिस्कस करेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अवॉइडेंस बिहेवियर, कि इससे क्या नफा क्या नुकसान होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग सब मिला के 4 4 8 4 12 लोग हैं, तो अगर हम 3 ग्रुप बना दें तो कैसा रहेगा? 3 ग्रुप बनाए या 2 ग्रुप बनाए? मुझे लगता है कि 2 ग्रुप बनाए तो अच्छा रहेगा, हर ग्रुप में कुछ अनुभवी लोग भी हो जाएंगे। 12 6, आई थिंक दैट शुड बी फाइन। ठीक है, तो मैं 2 ग्रुप में बांट रहा हूँ आप लोगों को। 10 मिनट तक आप डिस्कस करना कि हम जो अवॉइडेंस बिहेवियर जो हम करते हैं उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, कब नुकसान होता है कब फायदा होता है। अगर फायदा होता है तो लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म फायदा होता है। नुकसान जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो डिफरेंट कंटेक्स्ट में वो क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके बारे में आपस में बातचीत करना। और कोई एक आदमी जो उसको टेक्स्ट में टाइप कर लेगा और बाद में वो होस्ट को शेयर कर देगा, ताकि उसको हम यहाँ पे स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन शेयर करेंगे जब मैं आपको इनवाइट करूंगा शेयर करने के लिए। So far so good, everybody on the same page. um, yes, breakout room मिल गया, ठीक है। So let us divide in 2 rooms. तो आप सबको समझ में आ गया कि क्या करना है ब्रेकआउट रूम में? सबको Yes. अपनी बातें शेयर करनी है, अपने अनुभव शेयर करने हैं, और अवॉइडेंस बिहेवियर के फायदे और नुकसान क्या है इसके बारे में बातचीत करनी है। और आप में कई लोगों ने ये वीडियो बनाया भी है, तो मैं समझता हूँ कि आप सब तैयार होंगे इसको डिस्कस करने के लिए। जैसे संजय का अवॉइडेंस बिहेवियर पे वीडियो काफी अच्छा था, बाकी लोगों का भी अच्छा था, बाकी जिनका भी देखा मैंने। तो आप लोग अपने अनुभव शेयर करें और डिस्कस करें प्रोज एंड कॉन्स।
सर मैं कौन से वाले हाँ रूम में जाऊं? मैं अपने वो करता हूँ आपको विकास में। हाँ जी, हाँ जी। विकास कैसा चल रहा है, बाकी सब बढ़िया है? हाँ जी सर, मैं जिंदगी कैसी चल रही है? एक सेकेंड इसको पॉज। All right. So let me take the charge. Sure. So the topic here is benefits, pros and cons of avoidance behavior. So let me just summarize what avoidance behavior is. Like I'm sure you all must know, it is the things we do, जो चीजें हैं हम करते हैं अपनी स्टैमरिंग को छुपाने के लिए, दैट इज अवॉइडेंस बिहेवियर। सो इसके प्रोज अगर मैं कुछ बताऊं तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स फर्स्ट, बिकॉज दैट इज समथिंग जो कि बहुत सारे हैं। कौन कौन इज समथिंग लाइक कि इससे लॉन्ग टर्म में आपका जो अंदर का जो आप डर है वो रहता है आपके अंदर। आप चीजों से भागते हैं जब आप अवॉइडेंस बिहेवियर अपनी स्टैमरिंग से भागते हैं। और अगर आप किसी भी चीज से भाग रहे हैं तो वो आपके पीछे एक दिन आनी ही है। So that is one pro, sorry, one con of it. A pro that I can think about is that in the short term, if you are in a difficult situation and if you are trying to, switch words and to, be more fluent, basically in interviews or in some difficult situation in which you have to make a reputation out of yourself. Basically fake confidence, so there the avoidance behavior comes handy, so others can go. जी सर, तो एक्चुअली में मैं जो मैं इस पर सर एक्चुअली जो अवॉइडेंस बिहेवियर है सर, उसका एक जो सबसे बड़ा जो मुझे जो नुकसान है सर, वो उसका ये है कि जो चीज मैं जानता हूँ इसके तो मैं हमेशा उसको जो जो है अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें बोलना पड़ेगा इसमें। तो इसका मुझे सबसे बड़ा नुकसान तो ये है। और और इसमें एक जो है मुझे ये भी नुकसान है कि मैं बहुत सारे जो शब्द होते हैं उसको मैं स्किप कर देता हूँ, जो मुझे बोलने चाहिए, जो शब्द बहुत जरूरी होते हैं, उसको पर्टिकुलर वर्ड्स को जो जो उसकी जो पूरी लाइन को कंप्लीट करने के जो इम्पोर्टेंट वर्ड होता है, जो उसका कोर होता है, मैं वो वर्ड स्किप कर देता हूँ। और ये जो है मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कौन है इसमें। बाकी इससे फायदा तो इससे खैर क्या होगा, लेकिन ये है कि जो लोग गले को आराम मिल जाता है कि हम बात करने से बच जाते हैं। तो बस, थैंक यू सो मच। I think like गले गले में आराम मिलता है, लेकिन फिर मन में बहुत ही क्या कह सकता हूँ, जिम्नास्टिक्स चालू होता है। Sanjay, you want to go next? Yeah. हाँ हाँ. Hi everyone, am I audible? Yes. So firstly, like इसके जो कॉन्स है वो मैं बात करता हूँ। लाइक जो मैं अभी फील कर रहा हूँ कि जैसे मुझे लगता है कि अगर मैं फ्लुएंट हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ फ्लुएंट ही रहने की। तो उससे क्या होता है कि मुझे ब्लॉक्स और काफ़ी आते हैं। मीन्स अवॉइडेंस बिहेवियर से मेरी स्टैमिंग बढ़ती है। और जब मुझे लगता है कि हाँ मेरी स्टैमिंग बढ़ रही है, फिर मैं क्या करता हूँ, लाइक ठीक है अब इस वर्ड को फेस करता हूँ, देन मुझे फील होता है कि स्टैमिंग घटती है।
मीन्स इसका पहला क कौन से ये है कि अवॉइडेंस बिहेवियर से ब्लॉक्स एंड स्टैमिंग बढ़ती है। और इफ आई टॉकिंग अबाउट प्रॉप्स, देन आई थिंक यही है कि वी कैन फील फ्लुएंसी समटाइम, और like some uh, in some senses, so so sensible situations, or like interviews, any other where we can feel fluency due to avoidance। और अपनी लाइक एक मैंने फील किया है कि अगर लाइक मैं अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा लाइक बनाना है किसी के सामने, तो हम अवॉइडेंस बिहेवियर का यूज कर सकते हैं। बनती नहीं है उससे, बट हमें लगता है कि पर्सनालिटी हमारी थोड़ी अच्छी दिखेगी। आई थिंक ये मेरी तरफ से, और कुछ नहीं है। Well, ओके, आई थिंक संजय का हो गया है। नेक्स्ट अगर कोई ओके, या फिर मैं कहूँ? huh? आई थिंक अवॉइडेंस बिहेवियर अगर मुझ में है तो थोड़े शब्द आई थिंक अभी भी मैं अवॉइड करता हूँ। जैसे कोई र साउंड हो गया, जैसे प्रिंटर हो गया, इस डिफिकल्ट फॉर मी टू से प्रिंटर, प्रिंट, ओके नॉट ट्रांसपोर्ट, तो और जो आर शब्द आते हैं, तो मैं वो कभी एक्चुअली आर खा जाता हूँ। ओके, आई विल से ओके ट्रांसपोर्ट, तो इट विल बी इजी फॉर मी एंड इट्स ओके, आई थिंक वो मैनेज हो जाता है एंड इट्स नॉट अवॉइडेंस बिहेवियर, तो भी ठीक है। आई थिंक अवॉइडेंस बिहेवियर साइकोलॉजिकली है। आई डोंट, अगर कोई फंक्शन है तो एक्चुअली मुझे किसी से इतना बात करने का मन नहीं होता है। आई ट्राई टू कीप क्वाइट। वो वो अवॉइडेंस बिहेवियर है या फिर मेरी पर्सनालिटी ऐसी, आई डोंट नो दैट, बट आई मुझे एकांत में शांत में रहना अच्छा लगता है। जैसे थैंक यू, थैंक यू। Thanks for sharing. Yeah, I mean, I think for me, like we said before, I think that um when I avoid, I become more afraid. And then yeah, like that of course increases my stammering and everything, just the fear increases. And when I don't avoid and I actually speak, I'm less. हम मुझे आवाज नहीं आ रही है, फिर किसी को भी नहीं आ रही? Sorry, can you hear me? Yeah, Dhruv, now you're audible. Yes, sir, yes. Yeah. Okay, sorry. या My ध्रुव, fault. आपकी साउंड एक्चुअली Yeah. कट हो गई Okay. थी। ओके, It यू कैन से seems इट अगेन। Dhruv's internet is having some avoiding behavior also. It's like a big block. Yeah. My internet is stammering, you know. That's okay. We have to accept it. But no, yeah. Yeah. So I think for me now, like I kind of think that like avoiding is all cons. I can't really think of any pros. The like pros are just short term. Um, and then again, the short-term pros become long-term cons. You know, it's like a con game. So yeah,
it's like a hard to escape from it, I think. And I think that the only way out is actually just to be courageous and, you know, say what you want to say. Uh, however you're going to say it, and of course, you know, show your stammering, do voluntary stammering, and all of that. So yeah, I think that's that. Yeah. Yeah. Yeah, I agree with Dhruv totally. Like it's more like having short-term gain. And and we are mostly like, doing for that. Like if anyone is going to find a job, they are like कि अभी तो like fluent बोलते हैं, नौकरी मिलेगी बढ़िया वाली, बढ़िया नौकरी है. If they are going for a date तो it's like fluent बोलते हैं, date बढ़िया जाएगी. and, and नहीं तो रिजेक्शन ज्यादा मिलेंगे. But then maybe they end up, not they, like we, I also end up end up working with or say being with such folks कि फिर बाद में ऐसा रियलाइजेशन है कि जितना टाइम साथ में स्पेंड किया with them, it's not that's like where we are pure authentic. तो देन बाद में फिर यूं होता है कि 2-3 साल साथ में रहे, काम वाम किया, साथ में जिए, बट लाइक मजा नहीं आया. और तो इसलिए देन मे बी इट्स गुड टू हैव 99 रिजेक्शंस एंड फाइंड एनी वन थिंग लाइक दैट, जो वन मिलने के बाद विल बी एट मोर पीस मे बी. I think adding to Vikas that going on a date and like avoiding stammering and all. I think what I have to add is here that in the first date you can maybe avoid you can avoid some words, and so that they can know us as a whole, and love our personality more than our speech, and focus on our more overall personality than just our speech. So in the first date maybe we avoid our stammering, so that you can give that person time to and to know us overall, and not just judge us in the first instance on our stammering. Yeah. No, I somehow agree to this. Malab, it's like very hard to say in one line right or wrong, and but that's kind of in a gray space. Like say, if we are going on a date with someone, then she or he are also having some biases based on the things that they have seen. So if they don't have right knowledge about stammering, then they may judge, but like in next few weeks or few months, जब उनको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी ज़्यादा, देन दे मे फील कि हाँ ठीक ही है. एंड तो मे बी दैट कैन बी वन थिंग. एंड तो बट a bit gray space maybe. We can know views of Dhruv. Sure. So I think, I mean, yeah, this is being recorded now, so it's a little you know, that kind of a thing. I think actually, so like okay, fine. Let me just share my views first, and then I think Sonam has also joined, so we can hear from her. So basically, like um at times I have you know, like tried to be fluent, and then later on in my life I tried to be completely like open and, you know, honest. And I, you know, I think like when I tried to hide it a lot in the beginning and even during the relationship, because at that time I wasn't talking about acceptance. I like didn't even know like actually what I was doing, what I was avoiding and everything. So it became very difficult. And I think
like if we're avoiding stammering, we're also avoiding speaking. You know? So we can't actually be ourselves, you know. So then, you know, is the person really getting to know you or getting to know some image that you are portraying, and then you're gonna feel like, oh, that's not really me. You know, so anyway, it's a conflict then just inherently. So I don't, yeah. So anyway, I think that like the kind of only way out really is for us to demonstrate to them that we are okay with our stammering. Because if we're okay with ourselves, accept ourselves, then you know whoever you speak to is gonna accept us, right? It's like love your. It's like you have to first love yourself, then others can love you too. You know, Ex- you can then love others. So, sorry. it's like you have to be comfortable in your stammering so that the other can be comfortable in how we are stammering. First, you have to be comfortable with your stammering first. Yeah. Yeah. And I mean, I think also like yeah, I thought you were gonna say also like if we can like love our flaws or things that you know we feel guilty or ashamed about and stuff, then you know we kind of open the space that like the accepting space that that person, whoever you're with, is also gonna have things that they're afraid or ashamed about. So then they can also become more accepting and loving towards themselves. So it's like a, you know, I kind of think like lots of like partners kind of like think of like someone who can be so open and accepting is actually like a positive thing, you know? Hmm. Hmm. Grove has made this gray space into total white space. अब कोई डाउट नहीं रहा है, बिंदास अकलाओ, एक्सेप्ट करो और खुल के बोलो। So like let's hear from Sonam as well. What are your thoughts on avoiding? Hello, sir. Sir, can I know the question first? So like kind of what are your thoughts on avoiding stammering? Yeah, or Like speak. on if you are going in a relationship or marriage or anything? नहीं, No, like in general, in general. Yeah. मैं ना एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ कि अभी हम लोग अवॉइडेंस बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ स्टैमरिंग। अवॉइडेंस मीन्स किसी वर्ड को बदलना या किसी प्लेस पर जाना नहीं जहाँ पर बोलना है। तो आप बता सकते हैं कि आपका अवॉइडेंस कहाँ पे रहता है, एंड यू हैव ओनली 40 सेकेंड्स। Okay. So sir, जहाँ in case of any long conversation, तो मैं कहीं भी किसी से भी आई एम वेरी कंफर्टेबल। लेकिन इन काइंड ऑफ अ प्रॉम्प्ट वर्ड मुझे कहीं कुछ परचेज करना है, कुछ ऑर्डर करना है, तो मैं अभी तक मेरा वो अवॉइडेंस बिहेवियर चल रहा है। तो यही केस है, मतलब वन वर्ड इज प्रॉब्लम फॉर मी। कोई कॉन्वर्जेशन कर रही हो तो वहां आई थिंक मतलब वर्ड को चेंज करना बहुत आसान रहता है हम। है ना, अब मुझे कहीं जाना है, मुझे मालवीय नगर जाना Sonam ji, Okay, everyone is here. yeah. I mean actually जी like sentence cut off होगी. So like if you want to finish your thought, Sonam ji. ओके सर। Go on, हाँ सर, follow. मैं ये बोल रही थी कि वन वर्ड में क्या होता है कि हम उसी वर्ड को अवॉइड नहीं कर सकते। मुझे पर्टिकुलर कोई चीज खरीदनी है, उसका नाम मैगी है, बट मैं मैगी नहीं बोल पा रही, तो मैं मैगी के सिवा भी कुछ नहीं बोल सकती। तो मेरा अवॉइडेंस बिहेवियर वहां आता है जहां मैं चीजों को रिप्लेस नहीं कर सकती। और जहाँ पे लॉन्ग कॉन्वर्जेशन होती है वहां पे मतलब कोई भी पर्सन सामने हो, बट बहुत ही कंफर्टेबल रहती हैं चीजें।
Good. So let us have a group-wise presentation. So first group अपना अपना वो पॉइंट्स भेज दे तो उसको हम स्क्रीन पे शेयर कर लेंगे अगर ज्यादा पॉइंट्स हैं तो। हाँ, यस, तो विनायक ने भेज दिया है ये। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एक डॉक्यूमेंट में ताकि हम सब उसको देख पाएंगे। Vinayak, how are you so good? You are making room to, like, feel bit Okay, so bad. can you all see the screen? Yes, but not full. It's showing just one line. अच्छा, okay, okay. Okay. Just give me 1 second. Let me copy paste it somewhere else. Then you can see it. In the meantime, Vikas, can you summarize your group's findings? Yes, I can share that. तो हमारे ग्रुप में लाइक कॉन्स पे तो सबका बातचीत था कि कॉन्स जो हैं दैट वी ऑल नो काइंड ऑफ कि वी आर नॉट ऑथेंटिक एंड हम जो रियल सेल्फ हैं वो फिर दिखाते नहीं हैं, देन वी फील मोर बैड, वी आर हैविंग लॉट ऑफ pressure to be fluent, एंड देन वहाँ पर हम ठीक से लाइफ जीते नहीं हैं, और उस प्रेशर में वी एंड अप टू स्टैमर मोर एज वेल। तो ये वाला साइड था। देन देर वर फ्यू व्यूज अबाउट प्रोज साइड, लाइक एक बार आए वो ये थे कि मान लो इफ somebody is going on a date या फिर somebody is going for a job interview, तो वैसे में यदि सामने वाले को स्टैमरिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तब यदि आपने अपना स्टैमर ज़्यादा शो नहीं किया एंड फिर आपने धीरे धीरे सामने वाले को जानकारी दिया नेक्स्ट 2-3 वीक में, ताकि यदि सामने वाले को जानकारी नहीं थी तो सामने वाले ने फर्स्ट मीटिंग में जज नहीं किया, तो देन जब ये वाले व्यूज शेयर किए तो थोड़ा मोटा मोटा ऐसे लगा कि अवॉइडेंस थोड़ा बहुत वैसी जगह यूज किया जाए तो मे बी गुड, लेकिन फिर ध्रुव ने व्यूज शेयर किए कि यदि वहां भी ना वी विल नॉट फील आर ऑथेंटिक सेल्फ, और वैसे में हम सामने वाले के साथ सही से घुलने मिलने का मौका मिलेगा नहीं, और मे बी वी एंड अप गोइंग इन अ रिलेशनशिप जहाँ पर हमने एक मास्क पहना हुआ है, या फिर एंड अप गोइंग इन अ जॉब जहाँ पर वी हैव अ मास्क। तो
दैट्स वाई बेटर यही है कि बिना किसी मास्क के जैसा है वो दिखाया जाए, और खुद का फेस वैसा हो कि हमने खुद को एक्सेप्ट किया है, एंड वैसे में जो हम लाइफ जिएंगे वो एक काफ़ी पीसफुल लाइफ रहने वाली है। तो फिर ब्रेकआउट रूम के बाद सभी के व्यूज वैसे थे कि अब बिंदास रियल वर्ल्ड में जाएंगे, बोलेंगे कि यस वी स्टैमर एंड टोटली फाइन, और जिसके जो भी डाउट्स थे वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे। थैंक यू सो मच। Thank you, Vikas. Thank you so much. Let me invite Madhurima to go through this list and very quickly share the findings of this group, especially if they're different from the previous group. I mean, whatever points we agree, you don't have to repeat it. But if there's anything new, Hello, sir. Yes. Pardon. Like, please repeat the question because my net. are you able to see the screen? Are you able to see the share screen? Yes, sir. Yes, sir. I can. Ankit, filler words addition, word substitution between languages. Prose, it helps us hide our stuttering better. Yes, sir. I can see the screen. So go through this list. This is the output of your group, and you can go through this and see if there's anything different which we need to discuss. Your self-confidence comes down, you get scared of the words. When you stammered, it might increase further. No, sir, like I think that we have covered things that are written here, and because she explained it well, so I don't think I have to add something. Yes. Yeah. But here and there are some pros which I think other group has not mentioned. Like you added that one pros is adds an element of mystery to your personality. Yes. As we discussed that even I at your age went around like a very mysterious young man who didn't talk to anybody. So this could be an advantage, I don't know, but this could also be a kind of a handicap, because if you become too mysterious, then you don't have any friends at all. Do you agree with this? Yes, sir, definitely. Like becoming too much mysterious can also mean that we become too much invisible too sometime. Yes, invisible. Yes, you're right. Very true. We become invisible. We don't participate in any activity. Yes. And nobody knows about us. Even the lecturer professors, they never notice us. So here also, I think we are coming up with the same list that pros, it helps us hide our stuttering better in the short term, but in the long term, it is no good. It's a problem. Let me stop my video. Your self-confidence comes down. You get scared of the words where you stammered. It might increase further avoidance behavior. These are cons. Sanjay said, pros in situations where fluency is important, it helps us hide it. It has become a habit. It runs deep and comes back stronger. Let me invite Sagar to summarize his point of views. Sagar, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Sir, can you So please would you like repeat to share your question one thoughts on other? pros and cons?
share your thoughts on pros and cons. Okay. Sir, like I have to speak on my points. Yes. Yeah. So like as it's mentioned in the PPT, that my biggest avoidance is eye contact. Whenever I try to avoid volunteering stuttering, I probably I try to avoid eye contact to speak fluently and to avoid stuttering. So, uh, so I think uh, the cons here is if so. I think here the cons is like if I don't make the eye contact, I can speak fluently. But I think if you don't have the proper eye contact, so that person might not be interested in interested in what you are trying to say. So I think we should have have the eye contact with each people with whom we talk, so they will think that yeah, like his content is important, what he want to say. Yeah, so I think like eye contact is must in communication. Thank you, Sagar. But let me ask other people also that if we are avoiding eye contact as a avoidance behavior, because it helps us to talk better, not looking at the other person, avoiding the eye contact, what are the other cons of this behavior? What are the other problems? One thing, as Sagar said, the communication will not be good. The other person might think that what we are saying is not important. What are the other problems, possibilities? Anybody? If I may go, it Yes, go on. yeah, it doesn't show confidence in your personality. Yeah, that's it. Yes. Thank you, Yatharth. And some people might even think you as a shifty character. Shifty. They may not trust you. Why? Because you keep your eyes away from them. So they think he's hiding something. He's a shifty character. I can't trust him. Right? So that also is a problem. So pros and cons are there for each and every of these avoidance behavior. If you're switching languages, what are the cons of that? Let me ask Dhruv. Dhruv, suppose I say half the sentence in Hindi and half in English, and at the same time I claim to be PhD. What would you think of me? I think I mean if it makes sense in the sentence, then I kind of think that's okay. So because some Okay, but if kind of suppose it doesn't people make sense. Suppose it doesn't make sense. Suppose I say, "Bhai if it sahab, jara water de dena." if it Then doesn't what would you think? yeah no, yeah so then I think that of course it's there's something strange going on. Maybe this person might not, I don't know, yeah, might not be as yeah. He's not very well educated. Somebody might think, or somebody might think that he's trying to unnecessarily impress me by dropping English word here and there. He might even think that, right? So avoidance behavior always will have some or other problem. So I just want to summarize very quickly. I mean, these are your points. Avoidance behavior, when it succeeds, it becomes an addiction, right? If by switching word or if by avoiding the guest, you are able to manage, then you will definitely do it again next time. And so when avoidance behavior succeeds, it becomes an addiction. Addiction becomes a problem by itself. Second thing is, even when it succeeds, it leaves behind lingering anxiety, because your conscience says, why did you do that? So lingering anxiety is a side effect of that. Third thing is, avoidance behavior is not very efficient. It's an inefficient way of operating in the world. If mother says go and bring something and I take
like Ankit, a younger brother with me, then I'm not using the best. I'm not making the best use of my resources. A job which can be done by one person, I'm taking two people with me. Just because it's the avoidance behavior with me, I can't do my marketing on my own. So I've got to take my wife with me and my younger brother with me. So it's an inefficient way of dealing with the world. Fourth problem is, whenever you indulge in avoidance behavior, you are not offering your best potential. You're not putting your best foot forward. You're operating from a place of fear and self-doubt. And third thing is, as somebody already said in your group, that you're coming across not as an authentic person. You yourself start doubting yourself, that why did I do that? Am I really a shy person? Don't I really want to join the party? So you're not putting your authentic self forward, and that is the problem. So these are the cons. And pros, as somebody said in my group also, I think it was Sanjay Ojha, that that advantages are very short. थोड़े समय के फायदे के लिए हम अवॉइडेंस बिहेवियर में इंडल्ज करते हैं, मगर लंबे समय में वो हमारे लिए समस्या का है. So does anyone want to say something or add something? Dhruv, your hand is raised. You want to say something? I just wanted to say that Sanjay Kushwaha in our group was like our note taker. So Sanjay, if you like took some notes, you can send it in the chat so we can all see. या उसको आप टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हो, जो टाइम खत्म होने वाला है. इसको टेलीग्राम ग्रुप पोस्ट कर देना. बट बेसिकली मुझे लगता है कि आपके ग्रुप में भी कंसेंसस यही था, that avoidance behavior offers some advantage in the short term, but in the long term they cause problem. राहुल, आप सहमत हैं इस बात से? राहुल संगेलिया. यस सर जी. आप किस बात से सहमत हैं? सर एक तो इस बात से सर के जो शब्द बदलने पर सर एक, और एक सर जो आंखें चुराने पर सर के सामने वाले व्यक्ति को सर लगता है कि शायद इसके मन में चोर है या कॉन्फिडेंस की कहीं कुछ कमी है सर जी. तो हम लोग ये बात कर रहे थे राहुल की अवॉइडेंस बिहेवियर, जैसे आंखें चुराना, मेहमान के आने पे घर से जाना, शुरू के फर्स्ट क्लास अटेंड ना करना, ये सब अवॉइडेंस बिहेवियर जो ऐसे शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत फायदा होता दिखता है, मगर लॉन्ग टर्म में इन सबसे समस्या ही पैदा होती है. और जैसे यथार्थ ने अभी शेयर किया कि अवॉइडेंस बिहेवियर लीड्स टू लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज. बहुत सारे अवसर हम गंवा देते हैं इस चक्कर में. सो एवरीवन, थैंक यू सो मच. आज का सेशन बहुत अच्छा रहा. हम लोगों ने काफी सारी बातचीत करी, और होमवर्क इस हफ्ते का है कि आपको 3.1 के वेरिएशंस जो है वो रिकॉर्ड करने हैं इस बार. योर होमवर्क फॉर दिस वीक इज you have to make many more stammering interviews, but in a different language with a different audience, and you can even choose a different topic. If you are fed up of interviewing people on stammering, you are most welcome to interview people on AI, artificial intelligence, yeah, new governance policy, or whatever you want. You can change the topic. But if you're not, but लेकिन अभी भी अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी शर्म संकोच है, तो मैं कहूँगा कुछ इंटरव्यूज आप और कर लीजिए स्टैमरिंग के मुद्दे पर. ठीक है. और आप गौर करिएगा कि ये जो वेरिएशंस हैं 3.1 के, वो टास्क में समझाए गए हैं बोल्ड लेटर्स में.
मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत से आइडियाज मिलेंगे। तो क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं 3.1 पे? राहुल सोच के बताइए जरा। सर ये कुछ आइडिया नहीं सर, क्योंकि मैंने जो है जितने भी मिल रहे हैं सर, मैं उसी के हिसाब से ही आगे चल रहा हूँ सर। नो ठीक है, कोई आइडिया। बात नहीं। विनायक आप पढ़ पा रहे हैं ये बोर्ड में जो वेरिएशंस दिए हुए यहाँ पे? ये कैन यू रीड दिस? Yes, variations repeat in different languages and or with different audience. Begin with easy subjects. Later, interview challenging people, spouse, parents, office colleagues, teacher. If stammering as a subject has been explored enough, you can ask competent participant to record an interview on technical current topics as well, like ecology, economics, AI, etc. थैंक यू सो मच। बाय कॉम्पिटेंट पार्टिसिपेंट आई मीन यू योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि आप रेडी हैं तो आप दूसरे टॉपिक पे भी इंटरव्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत से एग्जांपल दिए हुए हैं, ये बहुत सारे एग्जांपल, इनको भी आप देख सकते हैं। सो तो ये आपका टास्क है इस हफ्ते के लिए। आपको 3.1 बहुत सारे बनाने हैं, और वो चैलेंजिंग ऑडियंस में जो मैंने लिस्ट दी है ना, स्पाउस, बॉस वगैरह वगैरह, इसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सन छूट गया, वो है मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। तो आप में से जो लोग शादीशुदा हैं, यू शुड रियली डू एन इंटरव्यू विद योर मदर इन लॉ और फादर इन लॉ। राहुल, आर यू अ मैरिड पर्सन? Yes, sir. then I'll be looking then I'll be looking forward to your interview with your mother-in-law Right. on stammering, not on AI. So before we conclude, I will need someone to summarize two things: difference between avoidance behavior and secondary behavior. And second question would be pros and cons of avoidance behavior. So who wants to take the first question? Very briefly, one line, the difference between secondary behavior and avoidance behavior. अंकित, आप ट्राई करना चाहेंगे? अंकित सिंगला। So, अंकित, good evening. Yes, good evening everyone. तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो अवॉइडेंस बिहेवियर होता है कि जब हम बोलते हैं कहीं पे, तो उससे पहले जो भी हमारे माइंड में चलता है या जो भी हम सोचते हैं कि अब हम नहीं बोलेंगे, या उसके लिए कुछ भी जो भी होता है हमारे अंदर। एंड सेकेंडरी बिहेवियर होता है जब हम बोलते हैं तो उस टाइम जो हमारे साथ होता है, जैसे बहुत बार आप ब्लिंक करते हो, मतलब आईज आप अपनी ब्लिंक करते हो, तो वो एक सेकेंडरी बिहेवियर है। या बहुत बार आप हाथ ऐसे मारते हो, मतलब वो काउंटर पे या मतलब टेबल पे, तो वो भी एक सेकेंडरी बिहेवियर है। और इसके और अगर मैं अवॉइडेंस बिहेवियर के प्रोस और कॉन्स की बात करूं, तो मेनली प्रोस तो क्या है कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि आप रिस्क नहीं ले सकते कि आप एज ए स्टैमरर अपने आप को प्रेजेंट करें, तो आप उस टाइम यूज कर सकते हो अवॉइडेंस बिहेवियर का। बट वो भी एक तरीके से अच्छी चीज नहीं है। बट अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। और उसके कॉन्स तो मतलब बहुत सारे हैं कि लॉन्ग टर्म में एक तो फर्स्ट तो आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सब रुक जाता है और आप में इम्प्रूवमेंट नहीं होती, और उस स्पेसिफिक वर्ड से आपको बहुत ही ज्यादा डर भी लगने लगता है। जैसे अगर मैं अपनी खुद की बात करूं,
तो अभी भी मेरी जो मेनली स्टैमरिंग है वो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स की है, तो वो उसी की वजह से है। मतलब मैं उनकी ट्यूनिंग ही भूल गया हूँ। जैसे कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको अवॉइड करते 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 मैं उनकी ट्यूनिंग या उनका बेसिक्स ही भूल गया हूँ। तो यस, आई थिंक दिस इज शॉर्ट ब्रीफ। Thank you so much, Ankit. Anybody wants to have any concluding thoughts? सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए 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 संजय। सर मुझे लगता है कि हम अवॉइडेंस बिहेवियर का इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि हमें वो इंस्टेंट हमारे ईगो को ग्रेटिफिकेशन देता है कभी कभी। जैसे हम छुपाना चाहते हैं तो हम छुपा लेते हैं, तो हमको शॉर्ट टर्म में लगता है कि हाँ हमने छुपा लिया, लेकिन कुछ देर बाद हमें महसूस हो जाता है कि हमने कुछ गलत कर दिया। वो सर ऐसे ही है जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं, तो इंस्टेंट तो अच्छा लगता है लेकिन वो हेल्थ पे बड़ा बुरा असर डालता है। एकदम ठीक कह रहे हैं, मतलब हमारी ईगो को वो को ग्रेटिफाई करता है, बिकॉज वी डोंट वांट टू एसोसिएट अवरसेल्व्स with stammering, because stammering is a socially negative trait, ऐसा हम मानते हैं। तो इसलिए if we can pass off for a fluent person, for a normal person, even for a shy person, हम वो भी कर लेंगे। And sometimes some people will even pass off as a dumb person. Van Riper, who was considered to be great grandfather of stammering therapy in America, I was reading his biography, and in one place he talks about, at one point he got so fed up of his stammering that he said, इससे बेहतर है मैं गूंगे बहरे का नाटक करूं। and he started doing that natak. If anybody asked him anything, he said he just made a ishara like this, and he goes to a farm and he begins working on a farm as a farm hand. And so it's a long story, but anyway, so the thing is, some people will choose voluntary mutism in preference to stammering. Why? Because in their mind, in their worldview, stammering is the worst possible thing, and they will do anything to avoid that label. So in a sense, you are right. It strengthens our ego that I'm a normal person, I don't stammer. But the thing is, how long can you maintain that appearance? How long? And with how many people? So therefore, in the long run, and even when you succeed at doing it, it robs you of your true self. You are no more an authentic person. It becomes a psychological problem, which is called inalienation. I mean, it's called alienation. You become alien to yourself. You no more know who you are. तुम्हें नहीं पता कि अब तुम कौन हो। तुम दिन रात ही सोचते रहते हो कि मैं कौन हूँ, मैं नॉर्मल हूँ या मैं स्टैमरर हूँ। So these are the problems of running away from the problem. I will not challenge that statement by someone when somebody said some situations it could be still be justified where you can't afford to stammer. We need to think hard about that. If there are chances where you can't afford to stammer, are there situations where you can afford to keep quiet? Can you? Are there chances where you can give people wrong impression? So we have to ask these very basic questions. मतलब ये जिंदगी मौत के सवाल वाले सवाल हैं कि आप कितनी कीमत अदा करना चाहेंगे। If somebody asks your father's name, what would you do? Would you like to stammer on the correct name or not? So ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबने इसके बारे में गहराई से सोचा। ये चैलेंजिंग इशू था, एंड थैंक यू सो मच। और अगले 7 दिनों में मैं चाहता हूँ और वीडियोस देखना आप लोगों के, क्योंकि मैं आप सबके हर वीडियो देख रहा हूँ, एंड आई एम लीविंग कमेंट ऑन दैट अनलेस कमेंट सेक्शन is closed. So please make your videos because I am looking at it with great interest and I am leaving comments also. और रजत, आप गांव के उन ताऊजी को मत पकड़ना जिनका ध्यान कहीं और भटक रहा है। तुमने ऐसे लोगों को पकड़ो जो समय दे सकते हैं।
Okay, guys, any last question, last comments before we close? लास्ट कमेंट ये है कि अभी रजत जहाँ भी जयपुर में जाता है लोग दूर दूर भागने लग जाते हैं। सबको पता लग गया, अभी पकड़ के इंटरव्यू लेगा मेरा। सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। सर एक्चुअली हाँ अवॉइडेंस सूरज बोलिए। बिहेवियर से सोशल सोशल कनेक्शन भी वही स्ट्रांग नहीं हो पाते। वी टेंड टू ओके अवॉइड द पीपल, तो इतने सोशल वो ये कनेक्शन भी नहीं हो पाते, और उससे है ना अपॉर्चुनिटी भी एक्चुअली वो ये मिस हो जाती है। हमारे जो भी नाते रिश्ते बनते हैं वो बड़े सुपरफिशियल होते हैं, क्योंकि हमें इस बात का डर रहता है कि कल को उसको पता चल जाएगा तो फिर ये मेरा दोस्त नहीं रह जाएगा। सो वट एवर रिलेशनशिप वी आर बिल्डिंग, दे आर वेरी सुपरफिशियल, based on a fear, on anxiety. Okay, so make many more 3.1 videos. If you can't record a video, you can record just audio. Even that is fine. If you can't do a face-to-face interview, you can do it on Zoom, on Telegram, or on phone call and record the call. So good night, everyone. Thank you so much. And maintain this enthusiasm, because so far this group is doing really very well. I'm so happy with this group. Everybody is pushing. And Dr. Amit Bajaj has sort of apologized. He couldn't come. He had some busy schedule. As you know, he has got a academic session going on, so he's got his teaching duties. So he had some urgent work, so he could not come today. So good night. Thank you. Bye. Take care and make many more videos. बाय सर, गुड नाइट। Good night, everyone. गो